Hello everyone, Khadija Shazad here from the platform of Never Cease to Grow, and I did a free session very recently from the platform of Methodologics और मैंने आपको ये भी बताया था कि they are doing a very good job. Do join their group और इस सेशन में हमने बहुत सारी learnings की थी जिसकी मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी और मैंने आपके साथ प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको बहुत सारे टूल्स जो मैंने यहाँ पर शेयर किए थे उसके बारे में ट्यूटोरियल अपने इस फेसबुक ग्रुप में बताऊंगी। लेट्स वॉच रीकैप ऑफ के हमने वहाँ पर क्या किया था। सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. Let me enlarge this video and let's watch this video just to remind ourselves कि हम लोगों ने उसमें क्या किया था। Yes, so I'm sure कि with this you must have had some glimpses of what we did. I have also shared a video on my Facebook group जो कि आपको मैं अभी दिखाती हूँ जो समराइज करता है कि हमने इस सेशन में क्या क्या सीखा था. So let me share my screen. Yes, so you can see my Facebook group which is never cease to grow and जब आप scroll down करेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं very importantly turning point की तरफ से PTDC phase 4 start होने वाला है so do not forget to register for it because बहुत सारे ज़बरदस्त sessions planned हैं तकरीबन 22 sessions हैं यहाँ पर हमारे पास and they're all amazing you can look at all the topics here uh, and if you scroll down further थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है so you just scroll down and right here we have it. Okay, so this was the video. You can watch this video the power of sketch notes जहाँ पे मेरी पूरे सेशन की समरी आपको मिल जाएगी. Okay, so let me just stop my share right here and get back to the presentation. तो आज मैं आपके सामने ये अपनी प्रेजेंटेशन दोबारा से ओपन की है एंड यू कैन सी देर आर सो मेनी टूल्स ऑन द इंटरनेट जिसको आप यूज़ करके हेल्प कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को एंड दिस कैन हेल्प यू ऑल्सो to sketch your notes very easily, very proficiently, and it is a good tool to introduce to the students as well to help them sketch things, right? कुछ टूल्स इसमें ऐसे हैं जिस पे काफ़ी लंबी ट्रेनिंग्स होती हैं जैसे कैनवा है प्रेजी है सो दैट आई एम नॉट गोइंग टू टच टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू टच टुडे इज ऑटो ड्रॉ सो जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन टू शो यू ऑटो ड्रॉ ओके हाँ जी वेरी सिंपल वेबसाइट है विद द नेम AutoDraw. You just go and write autodraw.com and this is the page that will appear. There are many options here. You can very easily introduce this to your children because number one there is no sign in required. Okay, सबसे पहले अगर हम टॉप लेफ्ट पे देखें तो ये बुक आइकन है इसको आप क्लिक करेंगे and then you can whenever you want to start over you can start over. There are three kind of pages that it has. The largest page is this one, a square page is this one, and I call this the third one a normal page. Then you have options for downloading, sharing, how to's के भी options है. There are shortcuts, artists के options and about के हैं. You can explore it in your free time. Select कर सकते हैं आप इस icon से तमाम icons को देख लेते हैं जो हमारे left पर है. Then the first icon and the magic icon is the auto draw icon. Okay, for example, if I want to draw a pencil, I will simply drag my pen
ठीक है, and here I'm trying to draw a pencil. So as soon as I've completed my pencil, it has shown me a lot of things that this pencil resembles. ठीक है, तो इसके लिए शायद ये पेंसिल को रिजेंबल नहीं कर रहा, और जैसे ही मैंने इसका रबर बनाने की कोशिश की, ऊपर से थोड़ा सा हमें ऑप्शंस मिल गए बहुत सारे, एंड देयर इज अ पेंसिल राइट हियर. सो आई कैन क्लिक दैट पेंसिल एंड द पेंसिल appears here. Okay, there are many other options of pencils also, so you can select and you can do accordingly. Then the second option, if you go on your left, is the draw option, and here you can enlarge the pen. You can make it thick, you can make it thin. It's upon you कि आपको निब कैसी चाहिए. इसके थ्रू भी आप जो है वो pen, pencil, whatever you want to draw, you can draw. Then there is a type option, so you can type wherever you want, whatever you want. Okay, so this is also done. You can change, you can fill the color with whatever color. अभी क्योंकि blue select हुआ है, तो I can fill my things with the color. जहाँ पर मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया, अगर जरा सा भी इंक आउट हुआ होगा तो वो पूरा उसको आउट कर देगा, जैसे हमारे पेंट में ऑप्शंस होते हैं, राइट. देन वी हैव शेप्स. देयर आर थ्री बेसिक शेप्स दैट इट हैज: सर्कल, square and triangle, which you can see on the top left side of the page. And then there are colors option, तो यहाँ पे बहुत सारे colors हैं, you can explore. There are a huge number of options available right here. And then zoom and undo का option. I hope कि this tutorial is useful for you. And with that, next time आपके साथ आऊंगी बाकी तीन tools लेके, और उसका भी ट्यूटोरियल आपको ज़रूर मिलेगा इसी पेज पे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल टुडे, एंड आई होप यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक, प्लीज़ डू इनवाइट योर फ्रेंड्स. हेल्प मी ग्रो, हेल्प मी रीच more and more people to teach them what we are learning. And Allah Hafiz, take care, have a good day, and keep ticking.